आपका होस्ट और दोस्त जेमी ऑल्टर। अगर लाइव स्ट्रीम है तो इसका मतलब है कि शो है क्रिकेट एंड कॉफी या कॉफी एंड क्रिकेट विद मी जेमी ऑल्टर। तो शो शुरुआत करते हैं एक सिप कॉफी से। सेम मग, द कॉफी कल्चर मग फ्रॉम द लवली पीपल इन भीलवाड़ा। वेल दोस्तों, आपने तो, अगर आपने देखा नहीं तो आपने सुना तो होगा, कल एशेज टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट मैच, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत तो गई 43 रन से, लेकिन इतना एक्शन पैक्ड, इतना कंट्रोवर्शियल, इतना एक्साइटिंग और फ्रैंकली काफी अगली दिन रहा डे 5 एट लॉर्ड्स। अगली क्यों? क्योंकि देखिए, जब ये दो टीम्स खेल रही हैं, जब ये इनके पास इतनी इतने सालों की हिस्ट्री है, बिल्कुल द सो कॉल्ड स्पिरिट ऑफ द गेम ध्रुव विल कम देयर। इट्स rather a flimsy term in my book। पर जैसे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलते आ रहे हैं और 20 साल से, दोस्तों आपको बता दूं, 20 साल बल्कि 22 साल होने वाले हैं, किसी भी ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंग्लैंड जाकर इंग्लैंड के अंदर एशेज ट्रॉफी नहीं जीती। तो इस सब के दो देखते हुए, दोनों टीम्स की हिस्ट्री को देखते हुए और बेसबॉल को देखते हुए, बेसबॉल जो फ्लॉप होते जा रहा है बहुत लोगों के नजर में, और फिर इमोशंस, एक रन आउट, एक ड्रॉप कैच, कितने ड्रॉप कैच, अगेन मिचेल स्टार्क का कंट्रोवर्शियल कैच, आई थॉट इट वाज क्लियरली नॉट आउट, लेकिन ग्लेन मग्रा, रिकी पॉन्टिंग, ये ऑस्ट्रेलियन वाले समझते कि ये इनका हक है बाकियों को कम करने की। जब जूता उस पैर पे होता है तो कुछ और होता है। When the shoes on the other foot, we often see the Australians more than any other people start to become rather contradictory, but I won't go there। इंग्लैंड वाले भी कहीं ज्यादा दूर नहीं है, इनकी भी कुछ गलतियां होती है। बट कल जो टॉकिंग पॉइंट था वो था जॉनी बेयरस्टो का डिसमिसल। अगर आपने देखा होगा तो आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। Johnny Bairstow was batting. He had not spent too much time. He played the ball and then he seemed to leave the crease। और पीछे से एलेक्स कैरी कीपर ने बॉल फेंका और वो हो गए रन आउट या स्टम्प्ड। आई थिंक इट्स रन आउट। इसके बाद दोस्तों जो कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि बेयरस्टो को लगा कि भैया अभी ओवर जो है वो खत्म हो चुका है। नाउ बेन स्टोक्स जब वो क्लैरिफाई करने गए थे अंपायर से, तो एक ने कहा कि ओवर हो गया, दूसरा ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ कहा नहीं। तो दिस इज द एम्बिग्युइटी एंड द डाउट। नाउ आई हैव ब्रॉट अप द एग्जैक्ट सेइंग इन द एमसीसी बुक, ठीक है। व्हाट डू द लॉ से, ये मैं आपसे एमसीसी लॉ ऑफ क्रिकेट रूल बुक से लॉ नंबर 20.1.2, ये मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं यहां पे। इट सेज, एंड आई कोट, द बॉल shall be considered to be dead when it is clear to the bowler's end umpire that the fielding side and both batters, आजकल बैटर्स हैं, बैट्समैन नहीं, यानी कि यहां पे अमेंड हुआ है वो टर्मिनोलॉजी, both batters at the wicket have ceased to regard it as in play। Let me read it once again for you in case आपने मिस किया या आप अभी इस वक्त शो पे आए हैं, जैसे कि एपेक्स। Law number 20.1.2 of the MCC's Law of Cricket states, the ball shall be considered to be dead when it is clear to the bowler's end umpire that the fielding side and both batters at the wicket have ceased to regard it as in play। तो आप समझ गए। अब बाउंसर आया 52 ओवर में, 52nd ओवर में कैमरन ग्रीन ने बाउंसर दिया बेयरस्टो को, बेयरस्टो ने डक किया और डक करने के बाद वो क्रीज से निकल गए सामने स्टोक से बात करने के लिए। पीछे से ऑस्ट्रेलियन कीपर एलेक्स कैरी ने बॉल फेंका स्टंप पे, तुरंत बॉल कलेक्ट किया और बॉल फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने उस समय पर क्रीज नहीं छोड़ा था। लेकिन जब बॉल पड़ी क्रीज पे तो बेयरस्टो ऑलरेडी क्रीज से निकल चुके थे। अब बेयरस्टो के मन में, इंग्लैंड टीम के मन में, ये आउट नहीं है, ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अगेंस्ट है। ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे भाई हमने बॉल पकड़ा, हमने फेंका, जब बॉल निकली कैरी के हाथ से तो बेयरस्टो क्रीज में थे, जब बॉल ने इंपैक्ट किया स्टंप्स पे तो बेयरस्टो निकल पड़े। अब बेन स्टोक्स से पूछा गया मैच के बाद, और बाय द वे क्या पारी खेली बेन स्टोक्स ने, 155 रन। एक समय पर दोस्तों इंग्लैंड की हालत खराब थी, बट बेन स्टोक्स द कैप्टन रिवाइव्ड होप्स एंड द थॉट्स। दोस्तों 2019 का जो एशेज टेस्ट था हेडिंगली में, जहां पे बेन स्टोक्स ने अपने करियर की सबसे बढ़िया पारी खेली, कल उनको देख के भैया वो पारी याद आ गई। लेकिन ऑलवेज एक तरफ दिल ने कहा यार बेन स्टोक्स के लिए लेट्स होप इंग्लैंड विन, पर लॉजिकली रन्स बहुत थे और जैसे ही ब्रॉड आउट हो गए फिर तो टेल तो बहुत कम थी। Anyways, Stokes was asked after the match, and I quote here, he says, I was asking the umpires if they had called over. They were both saying no, but then the square leg umpire and the standing umpire both made movements toward it,
being the end of the over, यानी कि ये टोटली कंफ्यूजन है, ठीक है। किसी को एक्चुअली पता नहीं है कि हुआ क्या। आप रिप्लेस देखिए तो स्क्वायर लेग अंपायर ने कुछ इशारा नहीं किया, सामने वाले अंपायर ने क्या किया वो रिप्ले तो मैंने देखा नहीं, इसीलिए दिस वाज कंफ्यूजन। द क्राउड, द टिपिकल इंग्लिश क्राउड स्टार्टेड टू बू। पहले शांति थी, तब वो गुस्सा हो गया बिकॉज अंपायर थर्ड डिसीजन थर्ड अंपायर के पास गया। जब रिप्लेस आए फिर वो बू 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 शुरू होने गया। और दोस्तों अब सबसे अगली बात, जब ऑस्ट्रेलियन टीम लॉर्ड्स का जो लॉन्ग रूम है जहां पे एमसीसी मेंबर्स वहां पे वो खड़े होते हैं, मैच देखते हैं, जब ऑस्ट्रेलियन टीम वहां से निकली तो इनको मैंने सुना नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, पर इट वाज वेरी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। आप देख सकते हैं कि कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने मुड़ के देखा, उस्मान ख्वाजा वाज मूव टू से समथिंग, यू नो। अब लॉर्ड्स के सारे ग्राउंड में से लॉर्ड्स की खासियत ये है कि यू हैव टू क्रॉस द लॉन्ग रूम, द हिस्टोरिक लॉन्ग रूम टू गेट टू द ड्रेसिंग रूम। किसी भी और ग्राउंड में पूरे विश्व में ऐसा नहीं है। तो ट्रेडिशनली इट्स बिन वेरी सिविल। लेकिन कल उन कंट्रोवर्सीज के बाद, मिचेल स्टार्क के वो कैच क्लेम के बाद और बेयरस्टो के रन आउट के बाद, बहुत सारे लोग, और आप वीडियोस देख सकते हैं, दीज आर प्रिविलेज्ड, I would say snooty, privileged, upper class British men. I literally spotted one woman in that crowd. So, coming just on the heels of that damning investigation into English cricket, which was found to be racist, sexist, elitist, to see the same people who probably many of them have been accused indirectly, to see them, booing and chanting and pointing fingers and probably even abusing, though we haven't heard. That kind of a response to Australia, frankly, was not on. आपके जज्बात जो भी हैं, आप privilege. This is the problem. That video, the clips of these privileged upper class white men, the same kind of white men who've been mentioned in that 4,000 in the document on English cricket, जहां पे 4,000 लोगों से सवाल पूछे गए थे। So it just says कि what is wrong with the English system. खैर मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरा यह मानना है कि दोस्तों जॉनी बेयरस्टो आउट है। अगर मैं होता, मैं ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स से कहता कि भाई आप अपने खिलाड़ी को कहिए कि वो क्रीज पे रहे। जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने हाफ मिमिकिंग उसके बाद किया, दैट्स व्हाट यू शुड डू। जब तक आपने अंपायर का इशारा नहीं देखा, आपने क्रीज क्यों छोड़ा? मेरे हिसाब से ये तो टोटल बेवकूफी थी जॉनी बेयरस्टो से। यू बॉल आई, आपने बॉल को डक किया, बॉल कीपर के हाथ पे पहुंचे नहीं और आप निकल गए। कीपर का तो पूरा हक है बॉल फेंकने का, ठीक है, एज पर द रूल्स। अब जहां पे ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वाली बात आती है, लेट द ब्रिट्स बू एंड बू एंड बू। यस वीरेंद्र कुमार, इट इज 100% आउट। दिस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दोस्तों, ये फार्स है। ये गेम जो इतने साल पहले ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स, ब्रिटिश ब्लू ब्लड वालों ने शुरू किया था, वो भी फिक्सिंग के लिए। क्रिकेट वाज स्टार्टेड एज अ मींस ऑफ फिक्सिंग, राइट? इट वाज रिच लैंड ओनर्स, रिच लॉर्ड्स getting their servants, their players, their own people, their villagers to play cricket, and they would bet on them. तो क्रिकेट की जो जड़ है, जो बुनियाद है क्रिकेट का, वो मैच फिक्सिंग से ही हुआ है। तो ये जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट टर्म है, ये आप मेरे सामने ना लाए। ये बहुत 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 साल दोस्तों पहले ये भ्रष्ट हो चुका है। So people can go on about it. Aussies can have their views, Brits can have their views. ऐसा कुछ नहीं है। जॉनी बेयरस्टो ने सरासर बेवकूफी करी। Alex Carey was within his rights to do it. What is your interpretation of the spirit of cricket? That's over to you. Let me take some comments. MCC website says, "हाँ बिल्कुल बिल्कुल." I've already read that out for you. What like the key batsman isn't attempting a run? What? But he walked out of the crease, right? The bowler just, there was no tap of the crease, there was no looking at the ball and thing, and he walked off. It can be assumed by Carey. यहाँ पे law is very vague. Until Jonny Bairstow looks at the umpire, asks or taps his bat, he ducked the ball and he left. That to me is stupidity. Alex Carey did not break any law. The law, as per the MC website, you've said, is dead when collected by the keeper and batsman isn't attempting a run. If the keeper's just taken the ball and Bairstow's left the crease, what's he doing? Right? It can be interpreted as taking a run. So I'm saying this is 100% out. मेरा prediction सही रहा। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया 3-2 win. I still think England can do it. मैं इस इंग्लैंड टीम को, देखिए, मैं बेसबॉल टर्म के खिलाफ हूं, but I think it's something which is making cricket interesting. हाँ, ये 2 मैच हार चुके हैं, लेकिन पिछले 15 महीने से जो बेसबॉल ने रिजल्ट्स दिए, I still think until it's over, I think England
Look, draw to nahi hoga. I still am not ruling England out of coming back 3-0. गुड मॉर्निंग जेमी भाई, टेक्सिंग फ्रॉम ऑफिस, गुड टू हैव यू क्रिक मेनिया। हार्दिक भाई कह रहे जेमी क्या मैच रहा ये स्मिथ का कैच, बिल्कुल बहुत बहुत सारे कंट्रोवर्सीज थे। Yes, keeping all the controversies, including Starks catch aside, Australia bowled and batted better across. Bilkul. The better team won the first Test match. The better team won the second Test match. There is no denying that. Ben Stokes had luck. He was dropped 3 times, but absolutely, you play better cricket, you will win. Yes, Apex, the whole day England crowd was booing. See, sometimes when Joe Root comes and they go Root, we think it's booing, but yesterday was entirely um, booing. Dhruv is saying never expected the so-called elite MC members. Yes, it is surprising, Dhruv, but having been to Lords the first time in 2008, Lords is an extremely overrated place. It is an extremely unaccommodating place. It can be hostile. Okay, दोस्तों सदियों से it's been dominated by rich, upper class, elite white men. Women have traditionally not been openly welcome. Over the years, they have been allowed there. An Ashes women's test match or any kind of women's test match has not been played there. Having been there as a journalist, after your first trip, you realize कि यार यहाँ पे ये कितने सड़े हुए हैं दोस्तों. I'm Indian, but until I open my mouth and I say it, when I enter Lords as a journalist, जहाँ मैं बहुत बार जा चुका हूँ, they will not assume कि I'm Indian. So I have seen the white privilege. I've entered Lords with two Indians, Indian journalists, as in brown skin Indian journalists, and I've seen the kind of difference it is for them. Sometimes the bag was frisked a bit more. Sometimes one is asked to step aside. तो ये सब मैं देख चुका हूँ. Lords is an extremely overrated experience. Nostalgia के sake, क्योंकि हम उस ग्राउंड को मानते हैं, बचपन से हमने बहुत कहानियां सुनी लॉर्ड्स की, तो पहली बार आप जाते हो बोलते हो वाह मैं पहुंच गया, लेकिन आप दूसरी बार जाओ आप कहेंगे यार इतना भी खास नहीं है। इनका मीडिया बॉक्स काफी आलीशान है, वहां का खाना खास इनका लंच बहुत अच्छा है, बट जस्ट टू गेट अप देयर यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट। इट्स अ वेरी वेरी स्टक अप, it's a very pretty ground. St. John's Wood is a very posh locality. वहाँ का जो tube stop है, the walk is very nice. आसपास बड़े-बड़े अच्छे cafes हैं, अच्छे apartments हैं. But when you get inside and you see the hostility or the arrogance of the place, you're actually rather disappointed. So it's a fair run out, but people behaving as if Alex Carey is in slimy. Saw his antics in BGD when he used to dislodge bail. So see, Australians will always just push the boundaries that much. But कल के हिसाब से, Alex Carey did nothing wrong, and Jonny Bairstow was a complete idiot for leaving his crease. The English fans can boo and they can sulk and all, but yeah, it was a bad decision. Apex, England will be back. Anderson out, Wooden. I'm saying I have seen this England team for the last 15 months do some incredible things. मैं 3-2 इन इंग्लैंड के फेवर मैं अभी रूल आउट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा कल अगर अगर एलेक्स क्या नाम है उनका अगर बेन स्टोक्स को कोई भी सपोर्ट करता, they would have chased that down. बिल्कुल हार्दिक, गांगुली का वो शर्ट निकालना बेस्ट. What a match that was, no? NatWest final 2000 and 2002. Anyways, we've seen the Jonny Bairstow dismissal spark debate. It was a fantastic day. Ben Stokes really revived hopes. Baki koi nahi chala. Again, Ben Duckett looked good. We saw some controversial catches. But that lunch break as the players walked through the long room, those images of all those stuck-up, snooty white men, going after them. It was a rather. बल्कि सॉरी यहाँ पे मैंने MCC का स्टेटमेंट निकाला है. 3 MCC मेंबर्स को बाहर किया गया. ये मैं आपके लिए MCC स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ. The long room is unique in world cricket, and the great privilege of players passing through the pavilion is very special. I don't know about that, but ठीक है. After this morning's play, emotions were running high and words were unfortunately exchanged with some of the Australian team by a small number of members. We have unreservedly apologized to the Australian team and will deal with any member who has not maintained the standard we expect through our disciplinary processes. It was not necessary to eject anyone from the ground, and I am pleased to say that there was no repeat of this as the players resumed the field for this afternoon session. Why would you want your players to even pass through what can very easily become a hostile situation? ये मुझे थोड़ी दिक्कत है इस बात से. उसके बाद आप देखते let's get some of the comments. Ian Ward जो है पूर्व इंग्लैंड बैट्समैन और स्काई स्पोर्ट्स के एनालिस्ट, उन्होंने कहा था I've never seen anything like it at the home of cricket.
The crowd were right into Australia when they were on the field, and that continued when the players went through the long room. Usman Khwaja was in a discussion with one of the members inside the long room. He was pulled away by a teammate and steward. David Warner, the same thing happened to him. पूर्व इंग्लैंड कप्तान वर्ल्ड कप विनर ओएन मॉर्गन जो मिडिल सेक्स के लिए बहुत साल तक खेल चुके हैं वहीं पे लॉर्ड्स में he said I arrived and signed here as a 16-year-old kid and am lucky to have played my whole career here and I've never seen anything like that in the long room. There was a huge sense of frustration. ये फिर से मैं Ian Owen Morgan के कोर्स दे रहा हूँ, but I can't understand why. It's complete naivety, sorry, misspell. It's complete naivety around Bairstow's dismissal. The ball is not dead at any stage when Bairstow leaves his crease. He was obviously in his own little bubble, and you cannot do exactly. Thank you, Owen Morgan, for saying this. It's actually really smart from Carey recognizing what is going on. Bairstow living in his own little world. Exactly, मैं कह रहा हूँ वो अपनी दुनिया में थे वो बुद्धू थे इस मामले में and seeing an opportunity to take a wicket. I don't see it compromising the spirit of the game. पूर्व इंग्लैंड कप्तान एंड्रू स्ट्रॉस Australia are the villains as far as England are concerned, especially Cummins and his decision not to withdraw their appeal of Bairstow. And I know यहाँ पे लोग सचिन तेंदुलकर, MS Dhoni, Ian Bell वाले run out को लेकर बात करेंगे, but that was very, very different. Cummins will get plenty of stick for the rest of the series, I would have thought, off the back of that. You could argue that it was against the spirit of cricket. In truth, I think there was absolutely nothing wrong with it. Of course, the crowd will see it through English patriotic eyes. Bairstow was being dozy going outside of his crease. I was completely comfortable with what Australia did. That was former England captain Andrew Strauss. Let's see what former Australia captain Ricky Ponting had to say about this. Kal ki baat hai ye. The more clarification we got, that goes down as stumped and not run out in the scorebook. That's enough. Johnny did the wrong thing and he is paid with losing his wicket in an Ashes test. As simple as that. It was a test for Pat, but he certainly didn't need to withdraw the appeal. I agree. Why should he do it? फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया कैप्टन मार्क टेलर ने ऑन एयर लाइव कमेंट्री में दोस्तों ये कहा नो ग्रेट सरप्राइज टू मी बेयरस्टो won't like it. Carey doesn't wait for him to walk out of his ground. He's throwing the ball as Bairstow is getting up from ducking under the bouncer. It doesn't look good and people are going to be unhappy about it, but it's the right decision. You've got to wait for the umpire to call over and then the ball is dead. That ball was still वेरी मच अलाइव एग्जैक्टली जो मार्क टेलर ने कहा मैं उस बात से सहमत हूं अब इंग्लैंड के टीम में से किसने क्या कहा अब देखते हैं कि ब्रॉड और कैरी को स्टंप माइक पे ये कहते हुए सुना दैट्स ऑल यूर एवर गोइंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर दैट अब दैट्स अ बिट ऑफ सावर ग्रेप्स बेन स्टोक्स ने कहा था मैच के बाद टेकिंग द होल सिचुएशन इनटू कंसिडरेशन द फर्स्ट थिंग टू से इज it is out. ये Ben Stokes ने मैच के बाद कहा. The thing I had to consider when I was out there was the fact that it was the last ball of the over. I very shortly questioned the umpires whether they had called over. Both were making the gesture towards walking back to their opposite positions. Johnny left his crease to come out and have a conversation in between overs like every batter does. And I think if I was the fielding captain at the time, I would have put a lot more pressure on the umpires to ask them around what their decision was around the over. Then I would have had to have a real think about the spirit of the game and would I want to potentially win a game with something like that happening? And it would be no. That was Ben Stokes, dosto, on this rather daft but rather controversial dismissal. Bhaskar कह रहे हैं 4 runs से जीतेगा ऑस्ट्रेलिया. आपकी राय मानना पड़ेगा. English pundits are so bad, they now thrash baseball. Oh, Ashutosh, absolutely. इतनी बार मैं कह चुका हूँ इंग्लैंड की मीडिया इनके पंडित्स इनके एनालिस्ट ये तो भाई हमारे देसी तो कहीं इनके आसपास नहीं है सबसे जिंगुइस्टिक लोग तो ब्रिटिश मीडिया वाले हैं ये मैं देख चुका हूँ 3 बार वहां जाकर excuse me Arpit saying excuse me Arpit saying MCC members booing and pulling up Khwaja for no reason was just unnecessary. Absolutely. I discussed this when the show started. What do you think of the placid pitches being made in England? Says Ankur. Well, Ankur, baseball is almost entirely dependent on the nature of the pitch. The more placid, the more flat, the more benign the track, the better chance of baseball happening. When has baseball worked on seaming decks? When has baseball worked on bouncing decks? Never actually. तो जब तक pitches flat रहेंगे, England team मानती है कि baseball के चलने के chances ज्यादा है. लेकिन अब उन्हीं pitches पर
आप 2 मैच हार चुके हो, अब आपको चेंज करना पड़ेगा। सर इंग्लैंड में पिच में स्विंग पहले जैसे नहीं हो रहा है, फ्लैट हो गई है। फ्लैट कराया गया है बेसबॉल। बेसबॉल सिर्फ चलता है जब पिच फ्लैट हो। Who will replace Nathan Lyon? Todd Murphy. There's no doubt about it. Todd Murphy, he actually bowled better than Lyon in India, and he got Virat Kohli 4 times. So the only other spinner in this squad is Todd Murphy, and Todd Murphy would play exactly. Only Jarvo 69. भाई Jarvo है कहाँ आजकल? आजकल तो वो just stop oil वाले पिच पे आ रहे हैं, ड्रामा न्यूसेंस कर रहे हैं। है कहाँ आजकल? कुछ तो प्लान कर रहा होगा Jarvo. Anyways, dostum, this was our discussion on the Ashes Test match, the controversy. Pranav is here at Test 150 is a good effort. It's even better when it's coming in the chase of 350 plus, and your team is 45 for 4, and it becomes more than an outstanding effort when you're playing on one leg with injury. I mean, Ben Stokes. If anyone in this world could have pulled off that, it was Ben Stokes. This is why. I mean, 2019 Ashes Headingley Test, 2019 World Cup, 2022 T20 World Cup Final. Ben Stokes तीनों मैच में आखिरी गेंद तक खड़े रहे। इसीलिए दोस्तों लोग इनको मानते हैं the best cricketer of this generation. It's tough to argue against it because, like I said in the last show, when you mentioned Ben Stokes and a question was asked about him being the greatest. जब आप सबसे बड़े मैच में नॉट आउट रहते हो, टीम को विक्ट्री लाइन के पार ले जाते हो, I think that defines greatness. So I have no doubt that Ben Stokes um, is definitely the greatest all-rounder of this era. So inconsistent, yes, but exceptional match winner. Do you think England would have won had Bairstow been not out? Definitely, definitely. Stuart Broad was hanging around. It's just that Anderson couldn't do anything yesterday, and the tail was a bit weak. Bairstow hote to pakka. I mean, look at that. Look at that same kind of track. Last year, England chasing 378 against India, and they won by 8 wickets. This England team can do anything. I know आजकल इनका थोड़ा बुरा time चल रहा है, but if they just pick the right players, don't go back to Moeen, give Anderson a break, play Mark Wood. Um, once the middle order starts scoring runs, सब ठीक हो जाएगा. एनीवे दोस्तों चलिए शो समाप्त करते हैं. भारतीय टीम वेस्ट इंडीज पहुंच चुकी है जुलाई 12 यानी कि आज का 9 दिन बाद वो मैच शुरू होगा. राइट नाउ द टीम इज देयर, दे आर टेकिंग पिक्चर्स, दे आर गेटिंग अक्लाइमेटाइज. सोशल मीडिया पे काफी प्लेयर्स ने कल इमेजेस पोस्ट किए हैं. तो वेरी सून आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट सीरीज and we'll look at the tests first because that starts first. The new WTC cycle starts with India playing West Indies on July 2nd. तो आने वाले दिनों में we'll try and do some more streams, focus on that. Baki, thank you to all of you who joined me on Monday morning. Have a great day ahead. Have a great week ahead. And I'll be back every morning or afternoon at least with one hot topic of the day or the day before. वैसे ख्याल रखिए अपना. मिलते हैं बहुत जल्द. This is Jamie Alter saying goodbye. Thank you for watching the Coffee and Cricket podcast with me. Love you all. Bye.